Good evening, everyone, and welcome back to the Esports Club Community Cup Season 2. आज हमारा डे 2 का शुरुआत होने वाला है। हमारे साथ जुड़ने वाले none other than Fritz himself. Fritz, आज के दिन हमें वो 6 प्लेयर्स के साथ शुरुआत होने वाली है। And by Mhm. the time the day ends, we will be down to the top 4 players. क्या मन में चल रहा होगा इन सारे प्लेयर्स के बीच, क्योंकि they have had such a long run. Exactly. And such a long run. They started off with what, 256 players. We'll have a look at the format for that. 256 प्लेयर्स के साथ हमने शुरू किया था ये टूर्नामेंट एंड एज सेड अब सिर्फ 6 बचे हैं। 250 प्लेयर्स तरुण एलिमिनेट ऑलरेडी हो चुके हैं। मोर देन दैट, इवन मोर देन दैट, ये तो राउंड ऑफ 256 है। सो अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हैव बीन एलिमिनेटेड। दीस 6 प्लेयर्स आर द वंस विल बी प्लेइंग इट आउट टुडे। अपर ब्रैकेट, लोअर ब्रैकेट कंबाइंड मैचेस रहेंगे एंड दो प्लेयर्स को हमने मेन इवेंट से ऑलरेडी एलिमिनेट होते हुए देख लिया है। तो नाउ द प्रेशर मोस्टली इज अपॉन द प्लेयर्स इन द लोअर ब्रैकेट्स। अपर ब्रैकेट के प्लेयर्स के पास क्योंकि कहीं न कहीं अभी भी सेकंड चांस है। So it is going to be important for the players coming in the lower brackets. But अभी we'll start off with the games in the upper bracket. So वो important games रहने वाले हैं। बट उससे पहले नजर डालते हैं सारे प्लेयर्स भिड़ किस चीज के लिए रहे फॉर अ मैसिव प्राइस पूल ऑफ 50,000 रुपीज। फर्स्ट आना यहाँ पर हर एक प्लेयर चाहेगा। 25K इज फॉर द फर्स्ट कमिंग प्लेयर। सेकंड प्लेयर की बात करी जाए तो यहाँ पर 15,000 दिया जाएगा एंड थर्ड पोजीशन प्लेयर विल बी अर्निंग 10,000 रुपीज। even the title is something that all of these players would be looking for कि डीसी कम्युनिटी कप सीजन 2 का चैंपियंस टाइटल जो है 25,000 के ऊपर चेरी ऑन द टॉप रहेगा। So this is something you need to keep in mind for all of these players. This is what you're playing for. Let's hope the best player comes out on top. बिल्कुल सही कहा। I still remember, earlier back then when we had the streamer showdown, so many people, were asking for the Mhm. community cup, and finally, Yep. with the community cup season 2, we got like what 500 more registration, जिसके बाद round of 256, and now all up to the upper and lower bracket finals पे बात आ चुकी है। पर चलिए अभी फिलहाल नजर डालते हैं हमारे मैचेस की तरफ कि आज के दिन कितने मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, हमारे कौन से खिलाड़ी रहेंगे जिनके मैचेस एंड जिनका आमना सामना होने वाला है। शुरुआत यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सौम्या वर्सेस रेड डेविल का। दिस इज वन ऑफ दी अपर ब्रैकेट मैचअप, तो यहाँ पे हार जीत उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा भी बनेगी। एंड आई से कि जीतने पे तो देखिए अपर ब्रैकेट फाइनल्स मिल जाएगा। इट्स लाइक जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम गोइंग डाउन और मे बी इवन गोइंग टू द टुवर्ड्स द ग्रैंड फाइनल। जैसे आपने प्राइस पूल की बात की, टॉप 3 की प्राइस पूल ऑलमोस्ट सुनिश्चित कर सकते हैं ये दोनों खिलाड़ी अगर Mhm. पहला मैच अपना जीत पाए तो। एट द सेम टाइम थलाम्स वर्सेस विजडिल, दिस इज द मोस्ट अवेटेड मैच। विजडल क्लीन डोमिनेशन कल दिखा था उन्होंने 6-1 का। स्लाम्स 5-4 से यहाँ पे थोड़ी एक अच्छे कांटे की टक्कर वाले मैचअप था। Yes. बट नाइकी एंड लोन वुल्फ पहला मैच हारे, फिर लोअर ब्रैकेट पे इनकी रन भी मुझे बड़ी प्रॉमिसिंग नजर आएगी। Oh yes, definitely. Lone Wolf, especially Nike, as you said, Thlamz के साथ ही उनका मैच था तरुण। एंड एक गोल से पीछे रह गए थे जहाँ पर बहुत अच्छा खेला था Thlamz ने लास्ट के कुछ लाइक अबाउट 20-25 मिनट्स के अंदर बॉल पोजीशन ही नहीं आने दी थी नाइकी के पास। सो इट वाज अ वेरी क्लोज गेम टू से द लीस्ट एंड काफी ज्यादा मजा आया था उस गेम को देखने में। सो नाइकी हु विल ही फेस इज गोना बी एन इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि नाइकी का अटैक काफी ज्यादा अच्छा है, डिफेंस भी उतना ही अच्छा करते हैं बट एट द एंड एक गोल से कहीं न कहीं पिछड़ गए थे। सो लेट्स हैव अ लुक एट द ब्रैकेट्स एज़ वेल। लोन वुल्फ नाइकी स्टिल वेटिंग फॉर देयर ओपोनेंट्स। सौम्य रेड डेविल्स, द लूजर इज़ गोइंग टू प्ले आई थिंक लोन वुल्फ एंड थ्लैम्स एंड विज़डिल के जो लूजर रहेंगे वो नाइकी के अगेंस्ट यहाँ पर पेयर अप हो सकता है। तो वी एसेंशियली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी तरुण कि जो हमने फर्स्ट राउंड के अंदर देखा था थ्लैम्स वर्सेस नाइकी, ये चीज़ हमें इस बार लोअर ब्रैकेट के अंदर भी देखने को मिल सकती है। जरूर, क्योंकि जैसे कि हमने बात की विजडल 6-1 का स्कोर लाइन था कल। ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। ही हैज अ वेरी अमेजिंग फॉर्मेशन, ही हैज सम ऑफ द ऑल स्टार प्लेयर्स के कार्ड्स हैं उनके पास, तो उस चीज का इस्तेमाल करना भी बहुत बखूबी से जानते हैं वो। बट ब्रैकेट्स को देख के देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी अपर ब्रैकेट मैचेस है, इनके लिए जो परिस्थिति है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है अगर वो अपने होम मैचेस पे उतना ज्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए। हुँ, हुँ। सारे मैचेस आपको दो देखने को मिलने वाले। जो हमारा पहला मैच है तो देखिए बहुत जल्द शुरू होगा, बट इट्स गोना बी लाइक अ येस। लीग स्टेज। देन वी आर गोना कम डाउन टू द एग्रीगेट स्कोर लाइन। इन केस ऑफ अ टाई ब्रेकर वील आल्सो कम डाउन कि किसने कौन से प्लेयर ने अपने अवे मैच पे सबसे ज्यादा गोल स्कोर किया। तो ये यप। सारी चीजें स्पेशली इट गेट्स वेरी एंटरटेनिंग व्हेन वी कम टुवर्ड्स दीस फाइनल डेज। बट फॉर नाउ लेट्स डायरेक्टली हॉप इनटू द मैच नंबर 1 एंड लेट्स सी कि पहला मुकाबला जो है वो आपको किस तरीके से किनके फेवर में जाते हुए नजर आएगा। इट्स गोना बी सौम्या गोइंग अप अगेंस्ट रेड डेविल, एंड दिस इज द अपर ब्रैकेट फिनाले। सो आई एम रियली गोना बी एक्साइटेड टू सी कि कौन से प्लेयर अपने मैच नंबर 1 पे आप एक लीड बना पाएंगे।
लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक। 4-3-3 होल्डिंग फॉर द अवे टीम रेड डेविल्स। क्या यहाँ पर उनको वो नंबर ऑफ गोल्स जो उन्होंने स्टार्ट किया था इस टूर्नामेंट को, क्या वो एक बार फिर से इसी गेम के अंदर देखने को मिलेंगे? लेट्स हैव अ लुक। सौम्य फॉर नाउ हैज़ द बॉल। अगेन पोजेशनल प्ले ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पोजीशन मेंटेन करेंगे, ही विल गो फॉर द फ्यू बैक पासेस। वो ओपनिंग्स ढूँढना चाहेंगे अपने ओपोनेंट के पहले मिडफील्ड और उसके बाद डिफेंस के अंदर, एंड देन ही विल ट्राई टू मेक दैट अटैक। वर्किंग ऑन द लेफ्ट विंग एम्बापे, अच्छा स्पेस है एम्बापे के पास। ही डिसाइड्स टू प्ले इट बैक। बर्केप, बेलिंघम, 2 डिफेंडर्स को अट्रैक्ट ज़रूर किया है, पासेस इट टू एम्बापे बट हकीमी। अच्छी डिफेंसिव स्किल एंड नाउ इज ट्राइंग टू गो फॉर द काउंटर अटैक रेड डेविल्स। फ्रॉलो थोड़ा फंबल कर बैठे, वरना एक अच्छा अटैक प्ले यहाँ पे बना सकते थे वो, बट नॉनदलेस बॉल इज बैक विद सारा सौम्या। एम्बापे टुवर्ड्स द राइट विंग, गेट्स इंटरसेप्टेड बाय मेसी। एक बार फिर यहाँ पे मौका मिला है कि रेड डेविल अपने द्वारा अपने प्ले को थोड़ा बना पाए। मिडफील्ड पे बहुत ही अच्छे पासेस हमें देखने को मिल जाता है, बट हाकिमी just steals the ball up in the middle of that ball, and Haaland comes up with the run. This is just one shot away, and that's the first goal. Haaland coming up to score the first one, and what a beautiful finish from himself. 1-0 की बढ़त यहाँ पे मिल चुकी है सौम्या को, and that's the ideal start which he would be looking forward for. 22 minutes देखिए समाप्त हो चुके हैं. Still 20 minutes I'll say is down the clock for the first half to, and Hakimi once again seals away the ball. He is just one pass away from making a run towards the net, but there goes another defensive play. This time Red Devil is just looking to bring up an equalizer on board. लेट्स सी, तो मिडफील्ड में काफी बार पोजीशन लूज किया है रेड डेविल्स ने। होपफुली दैट इज नॉट द केस दिस टाइम अराउंड। हर्नांडेज काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं, लेफ्ट बैक रहते हैं जनरली, बट इस बार क्रॉस, the defender comes and saves today. Although a missed pass towards Messi, still with the ball. Messi शॉट लेने की कोशिश थी, ब्लॉक किया गया। एम्बापे को भी हकीमी, physicality, just sheer physicality in that particular challenge, he is able to win the ball, and अब काउंटर पे निकलना चाहते हैं एम्बापे। शायद अगर थ्रू बॉल थोड़ी सी और वाइड रहती, या मे बी अगर एक एरियल बॉल जाते तो ओपनिंग मिल जाती, तो स्पेस मिल जाती। बट नॉट दिस टाइम अराउंड। रेड डेविल्स बैक विद द पोजीशन, ट्राइंग टू मेक एन अटैक फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड विंग। बिल्कुल, एंड आई थिंक खतरा टला नहीं है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्रॉस आपको आते हुए नजर आया, बट उसके बावजूद डिफेंस बहुत लाजवाब। सौम्या 3 बार लाइक शॉट लेने का मौका था रेड डेविल को, बट उन्होंने मिस किया। बट क्या ये टाइम पॉसिबल हो पाएगा? बहुत ही बेहतरीन क्रॉस, एंड आई थिंक कॉर्नर किक जरूर यहाँ पे रिवॉर्ड हुएगा, बिकॉज डिफेंडर जिस तरीके से डाइव उन्होंने यहाँ पे किया, मेक श्योर किया कि बिल्कुल भी अटेम्प्ट करने का मौका नहीं मिले। कॉर्नर किक, स्टिल पोजीशन इज देयर, बट ओके दैट्स एन हाफ टाइम विसल। मैन, ये फर्स्ट हाफ पे जितना प्रेशर रेड डेविल ने क्रिएट किया टुवर्ड्स द ऑफेंस, यू गोटा लाइक गिव इट अप टू हिम। पहला गोल उनके अगेंस्ट पे कंसीड हुआ, उसके बावजूद जस्ट लुक एट हिम maintaining the possession, once again going on for the counter attack, and this time it's Messi with the ball, gets intercepted by Hernandez. Hernandez थोड़ा फंबल कर बैठे। मेसी के पास अब गेंद है, रेनबो निकाला है डी बॉक्स के अंदर। ये थोड़ी खतरे की घड़ी जरूर उनके बन जाती, बट उसके बावजूद एक सफलतापूर्वक सौम्या को अब यहाँ पे पोजीशन बनाने का मौका मिला। बट मेसी बैक अगेन, passing towards the center. It's Modric, gets back to Messi. Messi at the right wing, looking for a cross in. There it comes, but keeper is going to take it. ओह, Emi Martinez takes the ball, and now is just going to buy a little bit of time, because सौम्या पिछले 30-40 मिनटों में थोड़ा सा ये प्रेशर को ऐसा लग रहा है कि प्रेशर में आ चुके हैं। so let's see though, another attack. He's trying to make another attack. A great skill from Haaland. ओहो, Long range attempt and puts it in the side netting. It's a brilliant goal for Haaland. And अपनी लीड यहाँ पर दुगनी कर ली है सौम्य ने। स्टार्टिंग में ही सौम्य पूरा का पूरा प्रेशर रेड डेविल्स के ऊपर डालते हुए, एंड विद दिस सेकंड गोल ही जस्ट माइट हैव सील्ड दिस पर्टिकुलर गेम तरुण। यहाँ से वापसी का रास्ता अब बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। लेट्स सी इफ रेड डेविल्स इज इवन अप फॉर द चैलेंज और नॉट। कुछ अच्छा पीस ऑफ स्किल नाउ मॉडरिच, it's a good attempt, but then again the defense is ready to deal with this। एक क्रॉस अंदर डाला है, बट ग्वार्डियल बहुत अच्छा डिफेंसिव ड्यूटीज निभाएंगे, और उसके बाद बॉल पूरी तरीके से क्लियर करी जाएगी। अगेन लुक एट द नंबर्स, लुक एट द नंबर्स इन डिफेंस, इज नॉट मच। एम्बापे क्या रन निकलेगा? रन तो नहीं निकला था, बट मिस पास, डिफेंडर का मिस पास आया था। एम्बापे स्टील कर लेते बॉल को तो शायद एक और स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी उन्हें तरुण। बिल्कुल, बट अब सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट बचे हैं फॉर द फुल टाइम विजिल टू कम इन, एंड फाइनली रेड डेविल ही गेट्स अ लिटिल रूम, ही गेट्स अ लिटिल स्पेस, और मौका है यहाँ पे एक पास का तलाश। बात शूट करने पे गए, दूसरी बार यहाँ पे एक बार फिर शॉट लेने का प्रयास किया गया, बट दैट वाज जस्ट शॉट ऑन टारगेट। कीपर सेव्स इट फॉर वन मोर टाइम, एंड दैट्स गोना बी अ लीड वंस अगेन। आखिरी 5 मिनट, एंड अ लिटिल फाउल बीइंग कमिटेड। देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ बदलाव होगा। फ्री किक फिलहाल तो रिवॉर्ड हुआ है रेड डेविल। Oh, he goes in for the cross, and there comes
to counter. Hernandez with the ball passes on towards Modric. Oh, good try from his side, but now it's all about the extra time and these extra minutes, which has been added from the referee. And there it goes. The full time That's it. whistle comes in. Saumya comes in with the lead. 2-0 का यहाँ पे शुरुआती लीड उनको मिल चुका है. अब यहाँ पे एक और एक अवे मैचअप पे सोम्या को जरूर अपने लीड को Yes. या तो मेंटेन करना होगा या फिर अपने ओपोनेंट खिलाड़ी को कैसे भी गोल करने से रोकना होगा. But the pressure which was Mhm. created from the side of Red Devil, it shows कि ये मैच अभी भी बिल्कुल भी उनके हाथ से गया नहीं है. He has Yes. opportunity, हम कह सकते हैं first match more of, he just had his hands warmed up and now he's all ready to and Yep. set for the second game. Oh, that's true. He is definitely ready for game number 2 एंड सौम्य शायद अगर फाइनल गोल ये कंसीड कर देते तरुण, शायद रेड डेविल्स अगर ये गोल मार देते तो थोड़ा-सा अपॉर्च्युनिटी बनता, बट 2-0 की लीड को कवर अप कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल रहने वाला है, थोड़ा-सा मुश्किल रहने वाला है रेड डेविल्स के लिए. 1 गोल इज़ समथिंग दैट वाज़ नीडेड वेरी मच. सौम्य ने वो कंसीड नहीं किया. आइड से ही वाज़ अ बिट लकी क्योंकि अगेन यू कैन नॉट कंट्रोल कीपर इन द गेम. कीपर तो वो डाइस जो मार रहे हैं, वो सेव्स जो निकाल रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे सौम्य की तरफ से, तो उस एक पर्टिकुलर प्ले में कहूँगा सौम्य थोड़ा-सा लकी हो गए. बट अदर देन दैट आई मीन सौम्य प्लेड फ्लॉलेस. उनकी डिफेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगी है. अभी तक तो इस गेम के अंदर क्लीन शीट मिली है उनके कीपर को भी, सो द कीपर इज़ आल्सो डूइंग हिज जॉब परफेक्टली. नाउ इट इज़ टाइम फॉर रेड डेविल टू स्ट्राइक. Get some goals, get some goals. So that is something I'm looking for in from this next particular game. And let's jump right into action. Let's jump and see कि क्या यहाँ पर एक इक्वलाइज़र जो है वो दागा जा सकता है या नहीं रेड डेविल्स की तरफ से. Bilkul, I mean, first game itself, you didn't saw much of those possession being maintained from Saumya. But once he had it, he made sure कि वो finish up कर रहे. He's scoring the goal, he's bringing the lead. First goal, first half पे goal, second half पे भी goal किया, and the defense is just too good. 5-3-2 ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है from the side of Red Devil. बदलाव है थोड़ा. 4-3-3, quite classical play. Saumya is going in with the classic formation. Now this time it's going to be that devil on the red jersey side and he starts things up for himself. Good passes towards the defensive side. Make sure करें कि थोड़ा आराम से ही सही, but whenever he's trying to make a run for him, he definitely comes out with a good finish. Ideally हर बार shot on target गया, but एक भी बार वो गोल में तब्दील नहीं हो पाया. Bellingham gets the ball, थोड़ा मिस पास हो गया, मेसी अपॉर्चुनिटी था, बट अब फाइनली बॉल जो है सौम्या को मिल चुकी है एंड दिस टाइम ही इज गोना प्ले प्रीटी केयरफुली. इतना जल्दी तो जरूर समय के लिए खेलेंगे नहीं, गोल्स की यहाँ पे जरूर उनके लिए थोड़ी मौके बन सकते हैं, बट लुक एट द डिफेंस. डिफेंस रेड डेविल का आपको बहुत ही ज्यादा लाइक अटेंशन दिख रहा है उधर. लेट्स सी द रेड डेविल्स. द गुड थिंग इज इस बार पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं तो उनके पास थोड़ा बॉल कंट्रोल रहेगा. अपॉर्चुनिटीज और बन सकती है, बट दोबारा से ये एम्बिशियस पासेस थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा रेड डेविल्स को, क्योंकि वो ये कंसीडर नहीं करते कि उनके ओपोनेंट भी अपने डिफेंडर्स को प्रॉपर्ली मूव करा रहे हैं अराउंड द फील्ड. दिस इज समथिंग यू नीड टू बी केयरफुल विद. बट अभी हालैंड अगेन द सेम ट्रिक विद व्हिच ही स्कोर्ड टू डिफरेंट गोल्स इन द प्रीवियस गेम. इस बार फाइनली डिफेंडर उस चीज को फिगर आउट करेंगे. एंड वंस अगेन अ रिस्की पास. आई मीन बर्कहेम के बिल्कुल बगल से गया है. इस बार लकी थे कि फाउलर तक पहुंचा, बट फाउलर was not able to make the most out of that particular ball. Once again, back with position is going to be Saumya. Hernandez still on the left wing. Mbappe looking for the run. Oh, there would have been a through ball opportunity थी, Mm-hmm. बट पास बैक किया उन्होंने. बिल्कुल भी यहाँ पे मौका देना नहीं चाह रहे. डिफेंस पे अभी भी आपको 4 खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं, बट चार्ज अप करने के लिए सिर्फ हाकिमी अलोन. एम्बापे विद सम स्किल्स विद द बॉल बट स्टिल मैनेजेस टू गेट अवे. बैक Oh, good बॉल उनको मिल space. चुकी है, खतरे की घड़ी. एंड व्हाट Oh, अ गोल दैट beautiful. इज. Oh my god, that goal is just so unique within its own self. How did he even manage to tackle all of these players? Back passes होने के बावजूद अपने आप को एक बहुत ही सही दिशा पे रखा, and end में वो जो finish था, man, just perfection right there for the side of Saumya, and he is all the way up in the aggregate score of 3-0. इस मैच पे तो भड़क मिल चुकी है, बट उतना ज्यादा भड़क अब उस प्रेशर में भी बन चुका है. रेड डेविल लुकिंग फॉर एन इंस्टेंट गोल. Modric passes it Oh, forward the and that's equalizer. another goal. This time it's going to be Mbappe finishing things up Finally. and bringing up an equalizer within the very first half itself. And what a beautiful finish that was from Mbappe. ग्रेट गोल एंड अ ग्रेट टाइम टू स्कोर एज वेल तरुण. जहाँ पर शायद हाफ टाइम में उनके लिए मोमेंटम लूज हो जाता, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन चला जाता अगर ये गोल स्कोर नहीं होता, बट अब ये गोल स्कोर करके इस हाफ में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आ सकते हैं. बिकॉज व्हाट ही नीड्स 2 more गोल्स रेड डेविल्स टू इक्वलाइज थिंग्स अप. ऑल्दो उसके बावजूद भी यहाँ पर सौम्य के पास एडवांटेज रहेगा क्योंकि उन्होंने अवे गेम के अंदर ज़्यादा गोल स्कोर किए होंगे. दैट इज़ वन डेफिनेटली मोर देन व्हाट
Saumya, what Red Devil was able to score. So let's see. He needs three more goals to finish this off in his own favor. Red Devils. क्या एक और गोल मारा जा सकता है? फाउलर डिसैली को बीट करना चाह रहे हैं, बट एक लंबा क्रॉस एम्बापे, एम्बापे विद द हेडर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द डिफेंडर, डिफ्लेक्शन ऑफ द डिफेंडर्स हेड इज व्हाट सेव्स द गोल आई थिंक। कॉर्नर जरूर कंसीड हुआ है तो अभी भी पूरी तरीके से खतरे से बाहर नहीं है, बट डिफेंडर्स आर डूइंग देयर जॉब परफेक्टली। पूरी तरीके से बॉल को क्लियर किया जाएगा। डिफेंस वापस पूरी अंदर आ चुका है अपने डी के, तो टू स्टॉप दिस अटैक समहाउ। लेट्स सी रेड डेविल्स किस तरीके से पार पा पाएंगे यहाँ पे। Wow, Frawler with a long range attempt outside the D box. बहुत अच्छा powerful shot जरूर था, but he just misses it by some inches right there. This time back again, Saumya, just 25 minutes remaining for him. 25 minutes, full-time whistle, and that's him with the lead of 2 goals at least. This time, a very good play. Haaland with the ball, पूरी तरीके से आगे बढ़ चुके हैं। एक अच्छा टैकल उन्होंने यहाँ नो पे नो नो निकाला। नो नो इसी नो। टैकल के बावजूद हालैंड जिस तरीके से बीट किया उन्होंने 2 डिफेंडर को, 69th मिनट पे यहाँ पे गोल स्कोर करके अपने लिए एक बार फिर लीड बना चुके हैं। And man, Haaland, the way he breaks out the defending players, I think this should be it. Red Devil, he needs an instant goal, and not just one, not just two, but at least 3 to just put an equalizer, and maybe 4 to just make sure कि वो अपने आप को लीड में बना पाए। And ये सारी चीजें करने के लिए अब उनके पास सिर्फ मात्र 15 मिनट बचे। पड़ेगा अच्छा पास सेंटर पे आया था फ्रॉलो की साइड पे, but Martinez comes ahead, steals away the ball, and now it's him with the lead. Let's see though, just what 22 minutes on the clock left, तरुण। थोड़ा सा अब सिचुएशन डायर लग रहा है, क्योंकि अभी तो इसी गेम को बचाना है रेड डेविल को। अभी तो इस गेम को बचाना है, उसके बाद 2 गोल की और लीड। फाउलर टैकल बहुत अच्छा, टैकल बहुत ही अच्छा गॉर्डियोल का। एंड जरूर मैं कहूँगा एक स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी डिनाई करी है, बट यहाँ पर काउंटर पे निकलना चाह रहे थे लुई फीगो। पूरी तरीके से उनको भी रिपोजेस करा जाएगा। बॉल बैक विद रेड डेविल। काफी तेजी से यहाँ पर विंग चेंज किया है। एम्बापे मनाना चाह रहे थे, बट इतनी आसानी से आपको निकलने नहीं दिया जाएगा। फर्नांडिस नाउ प्लेज इट टू मॉडरिच। एम्बापे विद द बॉल, क्या कंसोलेशन गोल मिलेगा? एम्बापे अटेम्प्ट लिया, Wow. डिफ्लेक्ट हुई बॉल अभी भी एम्बापे के पास, and he's able to score the second. At least he's able to save this particular game. टाइम बचा नहीं है तो 2 गोल्स तो अब यहाँ पर नहीं स्कोर कर पाएंगे रेड डेविल्स, बट अ गुड सेकंड गेम तरुण। I'd say it was definitely a good second game. इंटेंट देखा, इक्वलाइज पे खत्म किया, बट ओवरऑल एग्रीगेट 4-2 सौम्य मूविंग ऑन इन द अपर ब्रैकेट फाइनल। Man, Saumya, he just played it so well. And, same goes for the side of Red Devil as well. हाँ, Red हाँ। Devil, second match पे जो back-to-back उनके 2 goals है, it was finally Red Devil who was able to not just put the pressure, but also, bring out the results. Mbappe, 2 हुँ, हुँ। back-to-back उनके जो हमें goals देखने को मिले, incredible second match. But in the end, बहुत ही जल्द हम हमारे total score, हमारे aggregate score की तरफ बढ़ेंगे. And that's going to be Saumya, as you mentioned, going up all the way towards the upper bracket finals. Upper bracket finals उनको यहाँ पे पूरी तरीके से जाने का मौका मिला, and what that means कि आप already शायद top 3 में अपनी जगह बना हुँ, हुँ। चुके हो. यप। With that, Saumya also ensures a minimal prize pool of 10,000 rupees, but also यस। हमें यहाँ पे सौम्या के मैचअप का इंतजार तो देखिए जरूर रहेगा। साथ ही साथ रेड डेविल को तैयारी करनी होगी लेटर हाफ ऑफ द डे में अपने लोअर ब्रैकेट मैचअप के लिए। ओह, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। बट गाइस, दैट वाज इट फॉर गेम नंबर 1। गेम नंबर 2 के साथ हम लोग बहुत ही जल्दी वापस आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल जस्ट बी राइट बैक।
Welcome back, ladies and gentlemen, to the Esports Club Community Cup Season 2. Today, it's just the beginning of the day 2, and we have already got the first player who made all the way up Yep. to the upper bracket final. But with that, we will be moving on for the second matchup, and this matchup, Fritz, believe me, अगर आज के दिन कोई भी ऐसा matchup होता ना जिसके बारे में हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा competitive जाएगा, I would say this one matchup. Saumya versus Red Devil, तो देखिए 4-2 का स्कोर लाइन रहा, जहाँ पे second match it went all the way towards an equalizer. But Saumya, who had the lead in the home match, definitely came up on top. But now is the time for Thlamz versus Vishdill. ये दोनों खिलाड़ियों के मैचअप के लिए तो देखिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इनके जो आपको टोटल प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, टोटल जो फॉर्मेशन है, इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल. Red Devil, who lost his very, second upper bracket game, is now down against Nike. एंड इनका मुकाबला थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि नाइकी कल के दिन देखिए बहुत क्लोज मैचअप गया था उनका, बट उसके बाद लोअर ब्रैकेट के रन में बिल्कुल भी हमें अनबीटेबल नजर आया एकदम. ओह यस, लोअर ब्रैकेट रन इट वाज़ वेरी गुड फॉर नाइकी एंड रेड डेविल्स को इस चीज़ से अब थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि चलिए पहले तो आपने लोन वुल्फ को हरा दिया था, बट अब नाइकी एक ऐसे ओपोनेंट रहने वाले हैं जिनको आसान नहीं रहेगा हराना. सो इट इज़ गोना बी एन इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट. बट गाइस अभी टाइम है यहाँ पर गेम नंबर 2 का. सो लेट्स जंप राइट इंटू एक्शन एंड लेट्स सी अपने अपर ब्रैकेट की जर्नी कौन से प्लेयर कंटिन्यू करने वाले हैं. इज़ इट गोना बी क्लैम्स और इज़ इट गोना बी विजदिल? जी बिल्कुल, आई थिंक दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. फिलहाल आपको होम मैच लाम्स का देखने को मिलने वाला है, एंड हियर वी गो. मैच हमारा यहाँ पे बिगिन हो चुका है. आज जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही आइकॉनिक प्लेयर फ्रॉम द साइड ऑफ स्लैम, बट विजडल ही इज आल्सो नॉनदलेस. उनके पास भी आपको बहुत ही अच्छे डिफेंसिव, आई थिंक डिफेंस एंड मिडफील्ड पे उनका सबसे ज्यादा हमें रेटिंग कार्ड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं. बट चलिए फिलहाल तो हमारा गेम फिलहाल अभी बिगिन हो चुका है, and it's the kickoff coming in from the side of Vishdill, who instantly, I think it was the kickoff for लाम्स, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हो पोजीशन शुरुआती 4 मिनटों में तो देखिए ऐसे लूज आउट करने है वैसे तो नहीं है विजडल, बट मॉडरिच पासिंग ऑन टुवर्ड्स द अटैकिंग साइड. Zubio, oh, long range attempt, and Martinez dive करेंगे. Man, he almost had it felt, but somehow it all comes down to a corner kick in the very start 9 minutes. ओह! अ वेरी गुड लूपिंग बॉल एज़ वेल. प्लेयर्स नहीं आ पाए लेकिन सामने एंड डिफेंस अगर आप देखें तरुण तो इस समय सिर्फ क्लियर स्पैम हो रहा है. अभी सिर्फ आप शॉट ले रहे हैं, आप बॉल निकालना चाह रहे हैं अपने डी से. एक और स्लाइडिंग चैलेंज. आई मीन एम्बापे बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे उस अटेम्प्ट से, क्योंकि थोड़ा-सा एरियल रखते तो वो चैलेंज को शायद डिनाई कर देते. पर वन्स अगेन मॉडरिच पास निकालना चाह रहे हैं. ग्वार्डियोल बिल्कुल भी नहीं देना चाह रहे हैं यहाँ से बॉल इन. व्हाट इज़ हैपनिंग? दोनों ही साइड्स पे तरुण इट्स आइदर शूट और इट्स आइदर स्लाइड. यही 2 कीज़ अभी तक ज़्यादातर स्पैम होती हुई दिखी है. आई होप सो वी डू सी अ गुड गेम. नाउ विजदिल दो विद द बॉल दिस टाइम. हकीमी plays it to Modric. मेसी एक अच्छा अटैक राइट विंग से यहाँ पर बनाने की कोशिश. स्टिल मॉडरिच विद द बॉल. plays it to हर्नांडेज़. काफ़ी तेज़ी से विंग भी चेंज किया है यहाँ पर. एम्बापे को काफ़ी अच्छा रन मिला है. हकीमी तो मार्क कर रहे हैं, बिल्कुल भी कट इन नहीं करने दिया जाएगा डी के अंदर. वंस अगेन द ब्रॉल डाउन द मिडफील्ड. इट विल स्टिल गो ऑन. ड्रॉग्बा नहीं पहुंचने दिया. गार्डियोल काफी अच्छा डिफेंस. बॉल वापस जीतने में कामयाब हुए हैं क्लैम्स. लेट्स सी द काउंटर कितना अच्छा रहेगा. बर्कहैम ऑप्शन है उनके पास. सेंटर फील्ड से एक थ्रू बॉल Wow. जरूर निकाली जा सकती है. दैट इज Wow. एग्जैक्टली व्हाट इज पॉसिबल. Zobio, he is the person who makes these kinds of runs and is able to convert them as well. Edge of the box, a shot on target, a shot inside the goal, and that's the first goal for Thlamz. What a goal, man. What a, I'll say, those final touch, those movements, just an epic goal for the side of Thlamz. Back again, it's going to be Vishdill, who is instantly looking for an equalizer. बहुत ज्यादा जरूरत है इधर इक्वलाइजर के. ये देखिए मेसी को बॉल मिल चुकी है. क्या टैकल करके उन्होंने उस बॉल को निकाला. That should have been a goal, but somehow the distance and the keeper somehow saves it. Once again, the corner kick comes in. Keeper this time gets the ball in his hand, and what a play. ये first half is clearly showing ये दोनों खिलाड़ी आज इस मैचअप के लिए कितने तैयार है. 4 एक्स्ट्रा एडेड मिनट है. इजोबियो को पूरा Oh, समय मिल Zobio. सकता है, बट उनको यहाँ पे पूरी तरीके से टैकल किया जाएगा. लाजवाब डिफेंडिंग यहाँ पे आपको विजडल द्वारा देखने को मिली. मौका है एम्बापे के पास, पहले प्लेयर को यहाँ पे बीट कर चुके, बट समय से यहाँ पे रन आउट हो जाएंगे. एंड फर्स्ट हाफ एक 1-0 स्कोर लाइन पे आपको एंड होते हुए नजर आएगा. ब्रिलियंट स्टार्ट फॉर द साइड ऑफ बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स. The adrenaline is definitely looking quite high, but this is just first half. Full half अभी भी remaining है. पूरे chances मिल सकते हैं आप equalizer के. And there we go. Vishdill is back with the ball. Let's see Vishdill.
प्लेस इट टू हकीमी। पोजेशनल प्ले विजडल खेलना चाह रहे हैं। कल तो बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग खेल रहे थे। आई एम नॉट श्योर व्हाई डिड ही स्विच अप द मोमेंटम ऑफ द गेम। बट लेट्स सी इज दिस गोना इफेक्ट हिम इन द लॉन्गर रन और नॉट। एम्बापे दो इस बार अच्छा बॉल निकाला है। स्माइकल फिंगर टिप से सेव किया है। यहाँ पर कॉर्नर जरूर कंसीड किया है बट फार बेटर देन कंसीडिंग अ गोल। अ वेरी गुड स्टार्ट ऑफ द हाफ फॉर विजडल। लेट्स सी इफ ही इज एबल टू कन्वर्ट दिस एली। फ्री हेडर, कोई चैलेंज नहीं पर उसको ऑन टारगेट भी नहीं रख पाए। ऑन टारगेट रखते कीपर को शायद बीट ना कर पाते। इट कुड हैव बीन एक्सप्लेनेबल बट यहाँ तो ऑन टारगेट भी नहीं रखा। ये थोड़ा-सा कहीं न कहीं एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ रह सकती है आगे आने वाले मोमेंट्स के अंदर। यू नीड टू कीप दीस शॉट्स ऑन टारगेट, अदरवाइज़ प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हैं। बट अभी Thlamz वाज़ ट्राइंग टू मेक दैट अटैक। एक चीकी थ्रू बॉल निकालना चाह रहे थे ज़ुबियो के लिए। डिफेंस वाज़ रेडी, द डिफेंस वाज़ रेडी। उनको पता था व्हाट इज़ ऑन द प्लेट। पूरी तरीके से डिफेंड किया जाएगा एंड श्वार्ज़नेगर plays it to Hernandez this time around. Back to Schwarzenegger. Hernandez has options. Yes, definitely finds Mbappe. Mbappe रन इनका काफी अच्छा रहेगा बट गॉर्डियोल की तरफ से मार्क किया जाएगा। इजोबियो पोजीशन मांगते हुए आए, लंबा शॉट। थियागो सिल्वा की बॉडी उस शॉट को ब्लॉक करेगी एंड दैट्स अनदर कॉर्नर कंसीडर्ड। विजडल इस बार मैं कहूंगा अटैक थोड़ा सा ज्यादा कर पा रहे हैं बट अभी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक गोल स्कोर करना पड़ेगा। नॉट द बेस्ट पॉसिबल डिलीवरी ऑल्दो द पोजीशन स्टिल स्टेज विद हिम। Modric with the ball. Oh no. Oh, this could be a misplan. This would have been a result for, losing out the possession. But Hakimi gets the ball back. Just final 10 minutes remaining. लीड है अब तक सेकेंड हाफ में एक भी गोल कंसीड दोनों ही खिलाड़ियों ने नहीं किया है। विजडल स्टिल लुकिंग फॉर एटलीस्ट एन इक्वलाइजर बिफोर द फर्स्ट गेम एंड्स। सलाम्स अपने होम गेम में तो देखिए स्कोर कर चुके हैं बट अवे गेम में स्कोर करना ये प्रति आवश्यक रहेगा। हाकिमी स्टील्स बॉल अवे, gets the ball towards Hernandez in the left wing. Mbappe इंतजार करेंगे सेंटर पे, मेसी को बॉल मिल चुकी है, 2 एक्स्ट्रा मिनट but Hakimi somehow steals it away and it's going to be a possession back to Thlamz. He might play the time as well here क्योंकि ये मैच तो देखिए अब फाइनल विसल पे आ चुका है and only 1-0 के साथ हमें इस मैच की शुरुआत होते हुए नजर आई है। Both of these players, they're not going to give it up so easily, isn't it? क्योंकि Not at Thlamz, all. even though he is in the lead, just a goal of lead and still a whole Mhm. 90-minute match remaining. So let's move on to the next matchup जो कि विजडल का Oh, आपको let's होम go. ग्राउंड देखने को मिलने वाला है। एंड देखिए आज के दिन जितने भी हमारे गेम्स आपको नजर आ रहे हैं, इट्स गोना बी बैक टू बैक। सो इफ यू गाइस नीड, डू नॉट Yep, फॉरगेट टू हिट दैट लाइक एंड सब बटन एंड डू मेक श्योर कि हमारे साथ आप हमारे सोशल मीडिया पे भी पूरी तरीके से जुड़े हुए हो बिकॉज this is the community cup. You guys had an open opportunity and these are the top finest player whom we got from these registration. But now let's move on to the second game जो कि आपको let's विजडल go. का एक होम मैचअप देखने को मिल रहा है। I'll say कि विजडल still have a chance to equalize. लेट्स सी विजडल इंपॉर्टेंट वही चीज़ रहेगी ना तरुण, आपको एक गोल एक्स्ट्रा मारना पड़ेगा एंड देन अगेन वो आपको होम और अवे के मैचेस के ऊपर कंसिडरेशन करना पड़ेगा। ऑल्दो क्लैम्स का पिछला वाला होम गेम था तो शायद विजडल के पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बट लेट्स सी हाउ डज दैट थिंग पैन आउट। विजडल होपफुली इज एबल टू गेट एटलीस्ट 2 गोल्स टू कंप्लीटली मेक श्योर ही इज एबल टू कंटिन्यू इन द अपर ब्रैकेट्स बट मुश्किल रहेगा भाई। क्लैम्स के पास पहला गेम बिल्कुल झोली में कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। Let's see if he's able to make the most out of it or not. For now, we do have Vishdill with the possession. मेसी यहाँ पर एक रन बना ज़रूर रहे हैं। डिफेंस में इतना डीप मेसी, नॉट श्योर व्हाट फॉर्मेशन ही इज प्लेइंग। इज इट गोना बी अ सुपर डिफेंसिव फॉर्मेशन क्योंकि अभी भी बॉल है यहाँ पर। ड्रॉगबा 2 डिफेंडर्स को अट्रैक्ट किया था, शॉट लेना चाह रहे थे, ब्लॉक हुए थे। बॉल अभी भी यहाँ पर विजडल के पास ऑन द लेफ्ट विंग। ही इज ट्राइंग टू कट इन। एम्बापे ही वाज ट्राइंग टू कट इन बट हाकिमी अच्छा टैकल आएगा। कॉर्नर जरूर कंसीड किया बट इट्स बेटर देन कंसीडिंग अ गोल। लेट्स सी द डिलीवरी। This time the delivery is not bad. This really with the header What? and it's on target as well. This time it's on target. He's a very long player Tarun and उस चीज का पूरी तरीके से फायदा उठाया। He's able to net the first one. जो काम आपको पिछले गेम के अंदर करना चाहिए था कोई बात नहीं, यहाँ पे शुरुआत में ही कर दिया है and is able to overall equalize the score 1-1. Okay, Messi, he has an advantage. Looking for options here. Gets the ball towards Oh the no center. no 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 How no is there no. zero defender Okay. there? That is just a big blunder from the side of none other than the defending player. And I mean, that shouldn't have been happening at the very first place. But somehow there comes another equalizer. And I don't know what went wrong for the side of Vishdill right there. He just had the lead. He had most of these
नो एडवांटेज फॉर हिम टू ब्रिंग आउट एन इक्वलाइजर ऑफ द एग्रीगेट। ओके, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आउटसाइड जाने से बचाया, पर अब यहाँ पे अपने आप को बचाना होगा एक बहुत ही एलिमिनेशन के कगार से। यूजीबीओ मौका था पर थोड़ा मिस आउट किया, एंड देयर इज अ शॉट फाउल। फाउल बीन कॉल्ड आउट। हम्म। मॉडरिच, ओके, डायरेक्ट अटैक की यहाँ पे माइंडसेट से खेला जा रहा है। मेसी विद द लेफ्ट विंग। Oh, lob pass comes in, but the defense is right there towards the center हाँ, this time. No options for him to, look forward and go towards the D box. तीन डिफेंडर्स के बीच में प्लस वो बॉल डाली गई थी, तो आई आई रियली डिड नॉट हैव मच होप फ्रॉम दैट बॉल। बट अभी एक अटैक बनाया जा रहा है विज़डल की तरफ से, लेट्स सी। मेसी ऑन द विंग, plays it towards the center. Modric, long range attempt from Drogba, completely denied, completely denied. And यहाँ पर आप काउंटर पे निकल सकते हैं Thlamz. Nah, the defense around half line ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है कभी कभार अगर आप अपने मैन को बीट कर ले, बट वो होने ही नहीं दिया। काफी अच्छी तरीके से उनको रन डाउन किया एंड बॉल जो है अपनी पोजीशन में वापस ली है। ड्रॉगबा, बार बार ये चैलेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर और फाइनली रेफरी सीटी बजाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन से फ्री किक मिली है, एक लंबा अटेम्प्ट। ड्रॉगबा, did he just hit the pole? Whoa! It doesn't No matter good. because rebound पे Eusebio तैयार थे। He hits the keeper. The keeper saves it in the first time, but second time rebound पे बिल्कुल भी option नहीं दिया गया। And Vishdill, who started off the game on a positive note, might just end the half on the same note as well. Aggregate down to a 2-all. But this is where things are going to get interesting. Even if it's 2-all, Thlamz have an advantage क्योंकि उन्होंने अवे गोल में एटलीस्ट एक स्कोर किया है। Still one goal needed for Vishdill to win it. Still one goal needed for him to move all the way up towards the upper bracket. अब ये गोल किसके पास है, देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट फिलहाल Thlamz looking with a very promising play. Drogba Messi को पास किया है। Ole looking for him to counter, but he doesn't get it. Mbappe with the header, and that's the finest of finest finish right there from the tip of his head. He gets the ball in the net, and what a goal, Oh, man! Mbappe brilliant. just at the best of himself, and finally Vishdill, अब वो कह सकते हैं कि वो एक लीड में है क्योंकि अब उन्होंने अपने अवे गोल होने ना होने के बावजूद दो गोल की लीड रखी, एंड दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ही जस्ट हैव टू प्ले मोर टाइम नाउ। जस्ट 30 मिनट्स रिमेनिंग फॉर हिम, बट Thlamz इतना इजीली तो हार मारने वालों में से हेल्थी। यूजीबीओ के साथ बहुत अच्छा टैकल निकाला यहाँ पे, डिफेंडर को यहाँ पे बीट करके मॉडरेट से बॉल पहुंचा चुके हैं, बट दिस टाइम the counter Eusebio is going to come, and Drogba passing on to Messi. मेसी थोड़े अपने प्लेयर्स को आगे यहाँ पे जाने का मौका देना चाहते ताकि एक थ्रू बॉल आ पाए, बट शोले, oh, he misses it. Messi passes it forward towards Eusebio, gets it back towards Modric. Modric beating the first defender. Lob Oh, pass looking great quite pass. promising. Eusebio looking for opportunity, and there he No, goes with the goal. It's destroyed. gonna be Thlamz bringing it down to an equalizer, and man, this game is just gonna be never ending. Oh, Thlamz just got destroyed. His defense just got destroyed. क्या पासिंग निकाली है, एरियल बॉल्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल, एंड चौथा गोल दागने में कामयाब हो गए विजदिल। पिछले गेम के अंदर कुछ भी नहीं मार पाए थे तरुण, यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि होम एडवांटेज भाई मैटर करता Oh है। my god. बर्केम दो दूसरा गोल स्कोर करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा क्लोज लाना चाह रहे हैं उस गोल डिफरेंस को, क्योंकि क्लैम्स ने 1-0 की लीड ली थी पिछले गेम के अंदर। ही इज एबल टू, एम्बापे इज एबल टू स्कोर द गोल, बट विल दैट मैटर तरुण? क्योंकि अभी भी आपको काफ़ी गोल स्कोर करने जस्ट टू इक्वलाइज़। Yup, I mean, with that, we are up with a 4-3 aggregate. Just 11 minutes remaining down the clock. This time, it's all about the time जिसका फायदा यहाँ पे मिल सकता है विजडल को, एंड टाइम छोड़िए तो एक और एक रन के लिए बढ़ चुके हैं आगे। एम्बापे in the left wing, one cross away from getting the ball in the net, but he ओह नो, beats two defenders and he ही somehow नॉट ऑन gets a टारगेट। curve shot. Oh my God, Mbappe, he is just entertaining the entire audience right here. Both the Mbappes from either teams are just at the peak, but 4 minutes remaining. This could be the final play. This could be the final time. Thlamz ko ye final play. He needs to make it count. He passes it down towards Messi. Messi needs to work ओह his फिर से magic, but अगर somehow he gets intercepted. And with one extra minute, that seems to be the नो नो final टाइम, व्हाट अ whistle. कमबैक, Man, not like this. व्हाट अ Thlamz, who कमबैक। had the lead, 1-0 का ही लीड था उनके पास, but हाँ, that's what हाँ। we were talking, right? वो एक गोल की बात है, it could anyway come down to either of these players, but Vishdill, man, he played it all. He proved it why he's that one player who has one of the most goals in the entire हाँ, हाँ। tournament. 6-1 की कहाँ पे कल शुरुआत थी उनकी, and look where he got himself today.
पहले मैच पे हार दर्ज करने के बावजूद वो कॉन्फिडेंस होना इतना ज्यादा अपने आप को डिलीवर कर पाना, इट्स जस्ट नॉट दैट इजी, बट विजडल ही मेड इट हैपन। ओह दैट्स जस्ट ट्रू। आई मीन विजडल ने जिस तरीके से खेला, ओह व्हाट अ पॉजिटिव मेंटालिटी तरुण। आई मीन 1-0 से आप डाउन हो, आपने बहुत ही अच्छा शुरुआत किया, आपने 1-0 अपने ओपोनेंट को डाउन कर दिया, बट कुछ ही सेकंड्स के अंदर काउंटर गोल आ जाता है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर जी। उस गेम का इक्वलाइजर आ जाता है, एंड उस टाइम पे जो हार्ट ब्रेक हुआ होगा, आई मीन विजडल का, आई एम नॉट श्योर हाउ ही केम बैक फ्रॉम दैट। और उसके बाद लगातार 4 गोल मारे हैं, 4-3 के साथ ओवरऑल एग्रीगेट से विजडल ही विल बी कंटिन्यूइंग इन द अपर ब्रैकेट्स, एंड उन्होंने धकेला है थ्लैम्स को लोअर ब्रैकेट्स के अंदर। What a way to finish the upper bracket games for today. And ये जो TBD है, ये कुछ ही सेकंड्स में आपको डिसाइडेड मिलेगा, and Thlamz, he would be just kicking himself right now. He would be just like कि ये तो थोड़ा सा problematic चीज हो गया, and just look at that, Thlamz versus Lone Wolf. This game is not going to be easy at all for both of these players. And Red Devils versus Nike, man, Nike का जितना क्लोज गया था Thlamz के साथ, Thlamz आज अपनी ही मेडिसिन का टेस्ट उनको मिला है तरुण, मैं ये कहूंगा, क्योंकि एक गोल से पिछली बार उन्होंने नाइकी को हराया था, यहाँ पर एक गोल से जी। लोअर ब्रैकेट में ढकेल दिए गए हैं ना, अब लोन वुल्फ के अगेंस्ट मुकाबला करेंगे। I mean, we couldn't have asked for a better lower bracket run, because हाँ, you did not expect it, like Thlamz to be at the lower bracket from the very second round of the या upper bracket. We have Red Devil, we have even Nike, so we have got some of the best players who जिनमें से सिर्फ एक ही player would make all the way up हाँ, till the lower finals. इन 4 प्लेयर्स में से अब वो कौन से प्लेयर्स होंगे वो देखने के लिए आप जरूर हमारे साथ बने रहिएगा, as we will be moving on to a very short highlight break. On the other side, we will be back with the both of the matches, which is of the lower brackets.
Welcome back once again to the Esports Club Community Cup Season 2. Now is the time where we will be witnessing all of those players who have one Mhm. last chance to survive in the entire tournament. This is one of the time where they gotta go big or they gotta go home, because now we start off all the matches of the lower bracket. फ्रेंड्स, अब तक जितने भी हमने प्लेयर्स के साथ शुरुआत की थी, दे हैड एन अपॉर्चुनिटी, उतना ज्यादा प्रेशर नहीं था, बट अब it's at the peak because they are all the way just few steps away from making their way in for the lower bracket finals. And as you can see in the brackets, Thlamz versus Lone Wolf, Red Devil versus Nike. Only two players from both the matchup will, move forward, and two players might really get eliminated at this point. Oh, it's gonna be difficult. It's gonna be difficult for all of these 4 players and कल हमने देखा 2 प्लेयर्स एलिमिनेट होते हुए, अब आज भी तरुण 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो घर जाने वाले हैं. So it is gonna be important to see who comes out on top. Red Devils versus Nike is gonna be a next game, and then to top it off we'll have Thlamz versus Lone Wolf. Red Devils Nike तरुण, इनका गेम हमने अब 2-2 बार तो एटलीस्ट देख लिया. दोनों ही प्लेयर्स के 2-2 गेम्स हमने देख लिए. If you were to predict कि एक प्लेयर इनमें से कोई जीतने वाला है, who will that be? I mean, if you ask me, Red Devil, he has the first Mhm. game, and first match 2-0 हारे, 2-0 से हारे थे. Second Yep. match 2-all था. I do would like to see how Red Devil might perform in the second match, but for now let's directly dive in. Okay. And I do believe Red Devil might be the one who might come up on top, but what are your thoughts on it? हाँ। ओह! आप रेड डेविल के साथ जा रहे हो तो मैं नाइकी के साथ जाऊँगा। सेम प्लेयर पे नहीं रह सकते ना तरुण। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो आई विल गो विथ नाइकी एंड लेट्स सी इफ ही इज़ द वन हू कम्स आउट ऑन टॉप। बट अभी होम गेम फॉर रेड डेविल्स, थोड़ा-सा एडवांटेज ज़रूर रहेगा, बट विल इट बी इनफ फॉर हिम टू गेट सम गुड गोल्स? 3-4 गोल मार दे अपने होम गेम के अंदर तो आप एक ज़रूर बहुत कंफर्टेबल स्पॉट पे आ जाते हैं। लेट्स सी दो रेड डेविल्स विथ द बॉल, लेट्स सी इफ ही इज़ एबल टू कन्वर्ट इट और नॉट। I mean, the attacker of Red Devil is already all the way forward towards the attacking side, and Red Devil, yes, he does has a good formation, but if you ask about Nike, dude, he has 10 legendary cards out of 11. One of them is also a gold premier one, so I think Nike is definitely came in all prepared. He's all in for himself. Goal with the ball. He has an opportunity to pass on, but outside मिलेगा यहाँ पे उनको. अभी भी आप देख सकते हो राइट विंग पे पूरी तरीके से ओपन डाउन, एंड कोई भी प्लेयर कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं. It's going to be Bellingham with an opportunity to shoot, but just on the edge of the fingers. It's going to be keeper who somehow pushes it all away from the target. Once again the corner kick comes in. Modric ball है उनके पास, पास करेंगे, वो शॉट लेने का अटेम्प्ट. Oh, the defense is just so well done from the side of Nike, but still another attempt, and this time the second time keeper saves it from the shot being on target. काफ़ी काफ़ी क्लोज़ यहाँ पर मौके बने हैं। स्कोर नहीं कर पाए थे, बट अभी भी लुक एट दिस सैली तो इंटरसेप्ट करना भाग रहे थे। उनको लगा कीपर के पास आ सकता है, मैं उसे इंटरसेप्ट कर सकता हूँ। दैट वाज़ नॉट द केस। ऑल्दो स्प्रिंट पे थोड़ा-सा हाथ हटा लिया था यहाँ पर। आई एम नॉट श्योर व्हाई नाइकी, बट ही इज़ ट्राइंग टू गेट दिस अटैक टुगेदर। काफ़ी अच्छा लंबा रन एक ही प्लेयर के साथ, शॉट भी लिया, बट मार्टिनेज समहाउ सेव्स द बॉल एंड ये क्वेश्चंस उठाएगा डिफेंस पे। ना कोई टैकल करने आया, ना कोई रोकने आया। What was going on? I'm not sure. Red Devils हो अभी के लिए तो खतरा टाल दिया है, आउटसाइड जरूर कंसीड करिए, बट द डिफेंसिव स्ट्रक्चर इज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल तरुण। बिल्कुल सही कहा आपने. थियागो सिल्वा पासिंग इट ऑन, बेलिंगम, ओ सेंटर पे जावी है.
ओह! बहुत अच्छा बॉल निकाला उन्होंने, बट कीपर दोनों ही साइड से आज तो उन्होंने ठान रखा है कि बिल्कुल भी मौका नहीं देना है यहाँ पे। एंड एक बार फिर इस पूरे गेम का तीसरा गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सेव किया गया। Figo comes in with a very strong header. The attempt was really promising, but keeper once again second corner kick. This time it's going to be Nike. एक बहुत अच्छा लंबा प्ले यहाँ पे बनाने की कोशिश है। थियागो सिल्वा, एम्बापे उनको पूरी तरीके से यहाँ पे ब्लॉक डाउन करेंगे, और अभी भी खतरा टला नहीं है। एंड यहाँ पे आएगा एक और एक शॉट, एंड वंस अगेन Martinez doing what he's best at. He's just deflecting those shots, just deflecting those shots and I'm not sure नाइकी ने अभी तक स्कोर कैसे नहीं किया है क्योंकि बहुत horrendous डिफेंस हो रहा है इस समय यहाँ पर रेड डेविल्स की तरफ से। बिल्कुल भी कंपोज नहीं लग रहे। देखिए Bro, बर्केम, how is he stealing that ball off the chest of the players but the only thing keeping Red Devils in the game is Martinez right now. वो गोलकीपर को नहीं बीट कर पा रहे हैं नाइकी और दोबारा से look at the luck this guy has. क्रॉस बार पे यहाँ पर बॉल लगी एंड डिफ्लेक्ट हो गई एंड दैट्स द हाफ टाइम विसिल एज़ वेल। माय गॉड नाइकी कितने शॉट्स ऑन टारगेट लिए यहाँ, फाइनली तो लकी भी हुए रेड डेविल्स एंड स्टिल द स्कोर रिमेन्स 0 टू नथिंग। that दिस गेम नाइकी इस समय अपने आप को बहुत ज्यादा पंच कर रहे होंगे कि मैंने अभी तक कैसे कन्वर्ट नहीं किया एक भी गोल। and I think that should be more of a wake up call for the side of Red Devil. Upper bracket पे थे, all of a sudden he's in lower bracket, all of a sudden he might be down. एम्बापे एक बहुत ही अच्छा रन बना रहे, बट कार्लोस एल्बर्टो बिल्कुल भी ज्यादा अच्छा चैलेंज नहीं किया। हेडर की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है देखते ही देखते, एंड समहाउ थोड़ा मिस अवे किया उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी से। एक अच्छा डिफेंस आपको थियागो सिल्वा द्वारा देखने को मिली। तो देखते देखते आप देखिए 30 मिनट रिमेनिंग है, गोल अभी तक दोनों ही खिलाड़ियों से नहीं आया, एंड गोल की तलाश अब एक बार फिर नाइकी को, एज दिस अटैक इज लुकिंग स्टिल प्रॉमिसिंग। वंस अगेन इट्स गोना बी बेलिंगम। बॉल को पीछे लिया, पास बिल्कुल भी कर रहे नहीं है, तीन डिफेंडर्स को अपने तरफ खींचा, फिर पास निकाला, अभी ज़ावी कम्स अप विद द अटेम्प्ट, नो एंड वंस मार्टिनेज अगेन। for the fifth time he saves it, and he is just the wall behind the entire team right here. सारे डिफेंस को बीट कर लीजिए, बट मार्टिनेज को यहाँ पे डिफेंड कर बीट करना, that's not going to be a cup of tea. That's not going to be that easy. 70 मिनट समाप्त, पांचवा कॉर्नर किक भी आ चुका है। ये कॉर्नर किक पे आप शायद थोड़ी बदलाव ला पाए, बट नतीजा एक डिफ्लेक्शन और एक और कॉर्नर। माय गॉड दिस कीपर ही इज जस्ट सेविंग द डे राइट नाउ। लेट्स सी, तो इस कॉर्नर पे नहीं, इस बार तो चलिए डिफेंस थोड़ा-सा जगा हुआ था, आँखें खुली थी। क्या बिस्तर से उठा है अभी तक रेड डेविल्स का डिफेंस कि बस एकदम से आके खेलने लग गए बिना वार्म अप के? आई एम नॉट श्योर। दो काउंटर में चलिए फाउलर निकले हैं। लेट्स सी द इफ द स्ट्राइकर्स आर एबल टू डू सम जॉब और नॉट। एम्बापे स्पेस ढूँढने की कोशिश है बट फाउलर, क्या क्रॉस, क्या Bro, ड्रिबल और उसके बाद वो शॉट ऑन गोल। सर उन ऐसा लग रहा था नाइकी करने वाले स्कोर, नाइकी करने वाले स्कोर। 6-7 मौके मिस किए। रेड डेविल्स को एक मौका मिला, तुरंत कन्वर्ट कर दिया गोल। I mean, everything was so looking as if one pass is away from the goal, but that's how he tricks his opponents. And finally, the finish was just superb. Now it's the first goal for Red Devil, but चलिए पहला मैच है, 7 मिनट रिमेनिंग है, और आप देख सकते हैं इंस्टेंटली यहाँ पे अटैकिंग का मन बना दिया गया है। Xavi is in the net, he is all the way towards the box, and somehow Martin is saving the 7th goal. जल्द से जल्द बॉल लेने भी भाग रहे, क्योंकि जानते हैं माय 4 मिनट पे गॉड! जल्द से जल्द समय खत्म करना है। बट इसके पहले यहाँ पे गोल स्कोर किया जाएगा, इक्वलाइजर जिसकी तलाश थी फाइनली। नाइकी को, वो उनको मिल चुका है। आफ्टर सेविंग 6 गोल, फाइनली ही गेट्स बीटन अप। बट व्हाट अ कॉर्नर किक एज वेल, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे अपने आप को पोजीशन किया। Height was beyond him, but still he gets it in the net, and now it's all down to an equalizer. अब क्या इन फाइनल मिनट्स पे कोई एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बन पाएगी? तो आप देख सकते हैं अटैक पे पूरी तरीके से आ चुके हैं रेड डेविल, मौका नहीं देना चाहते, वो लीड गंवा चुके हैं अपने आप की, तो वो लीड वापसी करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्राउलर टेकिंग मैटर्स इनटू हिज ओन हैंड, बट जस्ट फॉर एक्स्ट्रा एडेड मिनट्स, ये मतलब हो सकता था एक की देयर वी अपॉर्चुनिटी गो। बन पाए, बट वो एक्स्ट्रा मिनट्स देखते ही देखते हो जाते समाप्त। And पहला मैच इसी के साथ 1-1 पे आपको एंड अप होते हुए नजर आ रहा है। ओह माय गॉड! व्हाट अ फर्स्ट हाफ! व्हाट अ ब्रिलियंट फर्स्ट हाफ दिस गेम नाइकी वर्सेस रेड डेविल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं कहूँगा तरुण। दैट इज़ द वर्ड आई यूज़। बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्स्ट हाफ हमें देखने को मिला था जहाँ पर बिल्कुल लगातार गोल पे गोल मारने की कोशिश थी नाइकी की, नहीं मार पाए। सेकंड हाफ में भी कोशिश चल रही थी, लगातार मार्टिनेज सेव कर रहे थे, द गोल वाज़ नॉट कमिंग इन। काउंटर पे एक बार निकलते हैं रेड डेविल्स, ही इज़ एबल टू स्कोर।
एंड फाइनली उसके बाद 87th 88th मिनट के अंदर आके एक गोल मार ही दिया नाइकी ने। व्हाट अ टर्न ऑफ इवेंट्स, जहाँ पर मुझे लग रहा था ये एक आसानी से, तरुण एग्री विद मी ओवर हियर, 5-1 6 का स्कोर लाइन हो सकता था। आई मीन यूजुअली अगर आप देखें मार्टिनेज की जगह कोई जी। और भी कीपर होते वहाँ पे, but it was not going to happen when Martinez is there. Somehow he was saving each and every shot, और ऐसा भी नहीं कि बहुत आसान शॉट्स रहे, वो फिंगर टिप सेफ थे सारे। बस वो इंचेस का ही फर्क था, अदरवाइज ऑल दोस बॉल्स वुड हैव एंडेड अप इन द गोल। बट व्हाट अ गेम, 1 ऑल इक्वलाइज करके समहाउ फिनिश किया रेड डेविल्स की। इसमें मैं तारीफ करना चाहूंगा कि इतने ब्लंडरस डिफेंस के साथ भी किसी तरह से उन्होंने वन वन ऑल मेंटेन कर लिया है। होप सो ये चीज सेकंड गेम में फिक्स हो जाए, एंड आई आल्सो डू होप कि थोड़ी-सी फिनिशिंग अच्छी हो जाए नाइकी की सेकंड गेम के अंदर, तो वी माइट हैव अनदर क्लोज एनकाउंटर। बट दिस गेम डिड नॉट मेक एनी सेंस टू मी तरुण, इट डिड नॉट मेक एनी सेंस टू मी। जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, 1 ऑल पे गेम खत्म होके गया है। I mean, lower bracket finals है. We are really anticipating कि जो second matchup है, वो इससे भी ज़्यादा हमें और unanticipated देखने को मिलेगा. Somewhere down the line, first of all, we saw some legendary 10 cards coming in from the side of none other than Nike, and फिर Red Devils की आप यस, बात कर रहे थे. Red Devils, just those, keeper play, and then, the first goal which he got. It was totally, he outplayed him in the mentality fight as well. But अभी के लिए ये जो गेम है, ये इन दोनों खिलाड़ियों में से किसी एक के लिए एक आखिरी गेम हो सकता है इस टूर्नामेंट का। अब या ये देखने के लिए तो देखिए जल्द से जल्द बढ़ते हैं हमारे गेम पे, बिकॉज द प्लेयर्स कैन नॉट जस्ट वेट, एंड वी आर गोना स्टार्ट अप द मैच क्वाइट सून। देख सकते हो आप दोनों ही प्लेयर कितने कंपेटिटिव, कितना क्लोज ये बैटल आपको ऑलमोस्ट जाते हुए देखने को मिलेगा। इट विल कम डाउन ऑलमोस्ट टू जस्ट वन गोल, 4-3-3 being the formation of Nike, while on the other hand we have Red Devils with the similar formation। बट अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जब आप फील्ड पे हो, तब इस मुकाबले में कौन अपनी बढ़त बना पाएगा। 1 ऑल का एग्रीगेट है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस सेकंड गेम में किस तरीके से यहाँ पे शुरुआत आइडियली नाइकी को मिल पाएगी, क्योंकि उनका होम मैच आपको अभी नजर आ रहा है। लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक। हावी अच्छा पास निकाला है फीगो के लिए, प्लेज इट बैक टुवर्ड्स हावी ऑन द एज ऑफ द बॉक्स। बट डिफेंस इस बार चलिए अच्छा था। रेड डेविल डबल टीम किया उस प्लेयर को, स्पेस दी नहीं, एंड अब यहाँ पर एक काउंटर का मौका ढूंढ रहे फाउलर। शायद डियागो सिल्वा को अगर बीट करते तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, बट सिल्वा वाज वेरी क्विक दिस टाइम। तो फीगो फॉर नाइकी, लुकिंग फॉर क्रॉस, गेट्स इट इन, इज अ बियो, बिल्कुल कूद गए। डिफेंडर को ऐसा समझाया कि आप 4 फीट के डिफेंडर हैं, आपको कूदने ही नहीं दूँगा मैं, और बिल्कुल उनके ऊपर से ही इज़ एबल टू स्कोर द गोल। लुक एट दिस, द डिफेंडर डज़ नॉट इवन जंप, and that was a very beautiful goal coming in for Nike. Finally starting off from the note where he left off in the previous game, and this is the first goal in this game. Red Devils trailing by 1. शुरुआती 14 मिनट्स पे आ चुका है वो पहला गोल, एंड यू कैन क्लियरली सी रेड डेविल ही इज डेस्परेटली लुकिंग ऑन फॉर एन इक्वलाइजर। पोजीशन पिछली बार बहुत लूज आउट किया था, ऑलमोस्ट 55-45 का पोजीशन दिख रहा था, बट फिलहाल मेसी को यहाँ पे एक बहुत अच्छा थ्रू बॉल यहाँ पे हो सकता था, बट समहाउ इट्स गोना बी नन अदर देन बेलिंगम पासिंग आउट टुवर्ड्स एम्बापे। एम्बापे सेंटर पे यूजिबियो को यहाँ पे पास किया गया है, बट एक मिस पास आएगा जिसके रहते द बॉल इज बैक विद द साइड ऑफ रेड डेविल। जस्ट फॉर हिम इट्स गोना बी 15 मिनट्स रिमेनिंग। एम्बापे सेंटर पे यहाँ पे अभी भी इंतजार कर रहे हैं हमारे फ्रॉलर, बट ही गेट्स द बॉल बैक टुवर्ड्स एम्बापे। ही इज मेकिंग श्योर कि वो यहाँ पे एक विंग का रन बना पाए ताकि फिर एक क्रॉसिंग की तलाश रखे, बट हर्नांडेज बॉल मिली थी पीछे, मॉड्रिच को वापस पास किया उन्होंने बेलिंगम विद द बॉल, Bellingham. और ही जस्ट लुक्स सो प्रॉमिसिंग विद हिज प्ले, Ah, विद हिज ड्रिबल, बट इन द एंड just one defender who beats him, and now it's down to the final 5 minutes for the first half. good attempt coming in the final few seconds. अभी भी कोशिश करेंगे रेड डेविल्स, बट लेट्स सी इफ ही इज एबल टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट और नॉट, क्योंकि डिफेंसिव आप लाइन देखिए, एम्बापे रन बना रहे हैं, उनको हमेशा एक डिफेंडर मार्क कर रहा है, जो प्लेयर ऑलरेडी बॉल ले रहा है उसको डबल टीम किया जा रहा है। सो रेड डेविल्स के लिए आसान रहेगा नहीं स्कोर करना। क्रॉस निकाला है, बट वंस अगेन सिल्वा इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्ट्राइकर। कोल क्लियर्स इट ऑफ, दैट्स द हाफ टाइम whistle Tarun। 1-0 नाइकी स्टिल लीडिंग रेड डेविल्स। एक और गोल, कम से कम एक गोल मारना पड़ेगा इक्वलाइज करने के लिए हमें, एक्स्ट्रा टाइम में और मे बी पेनल्टीज में भेजने के लिए। विल हैव टू सी दैट, बट उसके लिए अभी भी एक गोल मारना जरूरी है रेड डेविल्स का। लेट्स सी, बॉल पोजीशन उनके साथ है, राइट विंग से अटैक बनाने की कोशिश, मेसी समहाउ कीप्स द बॉल इन प्ले। बेलिंगम, ओह इंटरेस्टिंग वे टू पास द बॉल। प्ले ऑन का इशारा रेफरी की तरफ से, वाज आस्किंग फॉर अ फाउल मेसी, बट बेलिंगम
टुवर्ड्स मेसी, डिफ्लेक्ट होके पहुंची है बट इट डज नॉट मैटर, पहुंच तो गई है, शॉट लिया, कोल बॉडी डाली अपनी, पूरी तरीके से ब्लॉक किया एंड देन द पोजीशन इज बैक विद नाइकी. Zubio, oh man, he's just taking all the play for himself. Mbappe, he gets his chance. और अब तक वो स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी एम्बापे को नहीं मिल पाई है. फ्रॉलर इज हैविंग अ गुड प्ले एट दिस टाइम, बट समहाउ वो गोल मार पाना अभी भी एक बहुत बड़ी दिक्कत की परिस्थिति रही है रेड डेविल. 65 minutes समाप्त हो चुके. We are down to what, like 25 minutes remaining. Luis Figo, he gets defended quite well, but he will be rewarded and outside. कार्लोस आर्बिटो देखते किस तरीके से यहाँ पे बनाना चाहेंगे अपना प्ले. जावी थोड़ा अब आपको डिफेंस मिड पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं. बेलिंगम सेंटर पे दिया, उसी बियो को एम्बापे को मिल चुका है. एम्बापे with the Ooh, header, not on man, target. he jumps in so high but somehow he misses the target. 72 minutes समाप्त हो चुके हैं, 17 मिनट रिमेनिंग है. Things are getting a little out of hand for the side of Red Devil, but this is what my concern is. अगर रेड डेविल यहाँ पे स्कोर कर गए तो ये तो पूरा इवन स्टीवन वाला सिनेरियो बन जाएगा. Let's see Red Devils. Mbappe shows a piece of skill. Modric now. Alberto डिफेंड करना पड़ेगा. नहीं टर्न कर दे दिया बट बेलिंगम कवर किया अपने टीममेट को. थोड़ा सा फंबल हुआ था डिफेंस में बट नाइकी वाज एबल टू गेट बैक इनटू पोजीशन. फॉर्मेशन के अंदर वापस पहुंच चुके हैं. ओह ग्रेट थ्रू, ग्रेट लीव मैं कहूँगा बाय द अटैकर हो जाए. फाउलर क्या हाँ बॉल शायद प्ले में रख लेते तो एक मौका बनता था अटैकिंग बट नहीं. फाउलर वाज नॉट एबल टू डू सो एंड दैट्स अ गोल किक. लास्ट 4 मिनट्स ऑन द क्लॉक. अल्बर्टो चेज डाउन कर रहे हैं उनको फाउलर बट ये देखिए स्ट्रैटेजी, लंबे लंबे क्रॉसेस आप फेंकिए, स्पैम करिए उन क्रॉसेस को, बस ट्राई करिए ये टाइम खत्म करने के लिए. मे बी इन द मीन टाइम इफ यू आर एबल टू गेट वन अटैक दैट वुड बी जिस बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो. एम्बापे बॉल रिसीव भी करी है. Hakimi still is not able to take the ball of Mbappe. The keeper blocks it, but that should be time, right? That should be time. Red Devils नहीं मिलेगा मौका, नहीं मिलेगा और कोई मौका क्योंकि अब एलिमिनेट कर दिया गया है उन्हें. नाइकी finishes it off 1-0. Although बहुत एक लो स्कोरिंग गेम रहा है बट आप हमारे साथ जो वॉचर्स जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं गेम नंबर 1 से, दे एग्जैक्टली नो व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट गेम. ये 2-1 का एग्रीगेट नहीं था, ये थोड़े से और गोल पड़ सकते थे बट आई एम हैप्पी टू सी एटलीस्ट नाइकी इज द वन हु केम आउट ऑन टॉप क्योंकि यहाँ से अगर रेड डेविल जीत जाते तरुण, आई वुड जस्ट हैव बीन कंप्लीटली डम्बस्ट्रक. And Nike, even though वो पहला goal जो first matchup पे हमें देखने को मिला था, it was kind of against हाँ. him, yet he brings back an equalizer in this match, just a 1-0 to finish things off. Man, you got to feel it for the side of Red Devil. He started off this day with the upper bracket. Upper bracket पे पहले एक 4-2 का defeat मिला, and then when he came down, a 2-1 defeat for him. That was kind of enough for him to get the journey completed for the top 6 players indeed for the entire tournament. But man, Nike is still surviving. Nike has made all the way up to the top 4 position, and as you can see, the results 4-2, then 3-4, now 2-1. One final game remaining. It's going to be Lone Wolf who was waiting for the upper bracket matchup to end up, and Thlamz who have made his way down towards the lower bracket. It's only going to be one of these players who will move forward and play up against Nike tomorrow. So this game is going to be the deciding factor, as Nike would definitely be watching out for these two players. Thlamz definitely having those upper hand, but Lone Wolf nonetheless. कल के दिन उनका जो हमने एक lower bracket matchup देखा था, I kind of remember it was all the way like उन्होंने 5 goals score किया था अपने lower bracket and brackets पे नजर डाले तो आप देख सकते हो Lone Wolf 5-0 का score line था. Like अब there was opportunity जब 5-5 गोल किसी ने score किया, but उसके counter पे they did conceded goal, but that wasn't the case for the side of Lone Wolf. Oh, Thlamz is in for a treat right now. Let's see though if he's able to somehow counter Lone Wolf or not. क्योंकि एक important game रहने वाला है Thlamz और Lone Wolf का. The loser is going to be eliminated just like Red Devils was. And do you believe Tarun कि ये ऐसा player है Red Devils जिन्होंने यहाँ पर early upper bracket के अंदर run बनाया, but एक ही दिन के अंदर आके दोनों games हार के eliminate हो गए tournament से. I mean, very unfortunate, that's what I was saying. क्योंकि Yep. lower bracket में आप अभी Lone Wolf को भी देख लीजिए. It's not going to be easy Mhm. for Thlamz to just come up and beat him, Yes. because he is going to be too prepared. And these are the lower bracket players who are definitely having a good confidence level even after knowing that this might be the final game for them. But before that, Mhm. we might move on to a very short highlight break. On the other side, we will be waiting with the final match of the day, which is going to be none other than Lone Wolf, who will be going up against his opponent player
who just came from the upper bracket, none other than Thlamz. So let's take a quick short break. We'll see you guys on the other side.
Welcome back, ladies and gentlemen, to the Esports Club Community Cup Season 2. Today, we are down to the final match of the Yep. day 2. Before this day end, we have two more players remaining, out of which Mhm. only one player is going to make all the way up. The lower bracket wouldn't have been this better, but now it's the time for Thlamz going up against Lone Wolf, and we might have not really anticipated. Both of these players have been having a very top scoring games. Thlamz yesterday with a 4-3, I believe. Lone Wolf got first defeated 4-2. Then he came up with a 5-0 scoreline. Both of these players, in a nutshell, they are very high scoring players. But unlike that, I think this might not go as close as we expect. One of these players definitely might go with a very huge lead. Now, which one will it be? What are your expectations on that, Fritz? Thlamz versus Lone Wolf. I'd side with Lone Wolf this time. I Oh, don't know if that's gonna be the case or not, but Lone Wolf क्योंकि पहले ही लोअर ब्रैकेट के अंदर ढकेल दिए गए थे, बट उसके बाद अक्षित को तो बिल्कुल चित कर दिया था 5-0, कुछ भी स्कोर नहीं करने दिया था एंड 5-0 के साथ एक एग्रीगेट स्कोर में जीते थे. So I think Lone Wolf has a momentum that he needs. He might just be able to take this off from the hands of Thlamz, though it is not going to be easy at all. सो दैट इज़ माय प्रेडिक्शन तरुण। स्कोर लाइन मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा क्या लगता है? एक हाई स्कोरिंग गेम हमें देखने को मिलेगा? I mean, I am really not expecting a close matchup, especially knowing Thlamz that he has been very competitive. I believe हुँ, थोड़ा हुँ। वन साइडेड जरूर हो सकता है, बट चलिए फिलहाल हम हमारे गेम की तरफ बढ़ते हैं. बस लेट्स गो। देखिए, बातचीत तो चलती रहेगी, बट यहाँ पे you don't get to see these amazing players go up against every day. Today is going to be one of those days जहाँ पे इन दोनों खिलाड़ियों को पता है that अब तक इस मुकाबले में जो अपनी जगह उन्होंने बनाई है, उसके लिए how many days of grind, how many those times they have spent, and this is where things are going to change. This is where one of these players might go forward and might get knocked out. Alarms is all set with his lineup, but look after Lone Wolf, Ronaldinho, Ronaldo, Mbappe, Messi, you name it, and he got it. And there we go. Match की शुरुआत यहाँ पे हमारी हो चुकी है. The final game for the day two. It's Messi passing it on towards the wing. It's going to be Hakimi. अच्छा रन बना रहे, ज्यादा अपने आप को पेस अप नहीं करना चाहते क्योंकि बॉल का कंट्रोल एट द सेम टाइम लूज आउट करेंगे. और मेसी थोड़ा दूर पास दे दिया. चलिए, मेसी को बॉल बैक मिल चुकी है और आप देख सकते हो डिफेंस पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार है लोन वुल्फ का. यूज़ोबियो अच्छे पासेस निकालना चाह रहे हैं, बेलिंगम लॉन्ग रेंज वाओ. अटेम्प्ट. ओह माय गॉड! हिट्स द पोल एंड गोज़ ऑफ. आई मीन वेरी अनफॉर्चुनेट स्टार्ट फॉर क्लैम्स जहाँ पर एक शून्य की बढ़त मिल सकती थी. ही स्टिल हैज नो गोल्स टू हिज नेम. दीस मैटर. दिस इज वेयर दोस इंचेस मैटर मैन. थोड़ा सा शायद अगर शॉट नीचे होता तो वो गोल कन्वर्ट हो जाता. दैट्स नॉट द केस. द लोन वुल्फ नाउ again just spamming those crosses, just hoping to get a gap in the midfield जिसका वो पूरी तरीके से फायदा उठा सके, जिसको एक्सप्लॉइट कर सके. Hakimi finds Modric. They tried to get the ball to Ronaldo but Bellingham बहुत बहुत तैनात थे, बिल्कुल पूरी तरीके से सतर्क थे इस चीज की पॉसिबिलिटी के लिए. He was able to intercept the ball. This time the long range attempt Isobio. चलिए डिफेंडर को तो बीट किया था उस बॉल ने, बट मार्टिनेज लाइन क्लियर करी, बॉल आराम से कलेक्ट करी है. लोन वुल्फ प्रेशर में नजर आ रहा है. I mean, you don't often see Lone Wolf at such position. And has he got the ball all the way towards the opponent, penalty box? Because still the struggle is on for him. Modric बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे अपने अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हुए विंग को पूरी तरीके से क्रॉस इन लाया. हर्नांडेज सेंटर पे पास किया रोनाल्डो को, बट somehow he misses it. Pass, oh, हाँ, extends the wing क्रॉस again. स्पैम हो रहे हैं. That's good, that's great. Messi comes up with the cross, but oh, he wasn't just able to finish it. That was a beautiful play. Lone Wolf definitely making options and doing what is really out of the box, but now it's going to be Messi from the side of Thlamz, and he passes it back towards Modric. Zubio मौका निकालना चाह रहे हैं. मेसी को बॉल मिल चुकी है, एक सिंगल क्रॉस, एंड दैट कुड बी इट. बट थोड़ा फाउल को यहाँ पे कॉल आउट किया गया. दैट वाज एन ऑफ साइड इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट चलिए, गोल किक के साथ अभी के लिए शुरुआत होगी 3 एक्स्ट्रा मिनट से. अब आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि हमारा जो फर्स्ट हाफ है वो 0 गोल्स पे रहेगा, स्पेशली व्हेन यू हैव सच हाई स्कोरिंग प्लेयर्स जिन्होंने ओवरऑल इन द टूर्नामेंट्स आई बिलीव 7 to 10 गोल्स अपने इंडिविजुअली स्कोर कर चुके हम्म. हैं. फर्स्ट हाफ इसी के साथ देखिए समाप्त हुआ, बट अब और 45 मिनट्स पे यहाँ पे वो पहला होम मैच भी समाप्त हो जाएगा थलाम्स का. लेट्स सी Thlamz हाउ डज ही वांट टू कंटिन्यू दिस गेम राइट नाउ, क्योंकि स्कोर तो अभी तक कर नहीं पाए हैं एंड वो थोड़ा सा आपको जो क्रॉस स्पैम है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा. यू नीड टू गो फॉर द शॉर्ट पासेस अ बिट मोर.
क्योंकि गैप्स तो देखिए मुझे क्लियरली दिख रहे हैं लोन वुल्फ की डिफेंस में। अगेन इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी एट ऑल टू जस्ट गेट द बॉल थ्रू एवरी टाइम। इस What? बार रोनाल्डो What? Oh, फ्रॉम द फार पोस्ट इट डिफ्लेक्ट्स इन द गोल। हम लोग बात कर रहे थे छोटे पासेस निकालिए, ये करिए, वो करिए। लोन वुल्फ ने कहा चुप, मैं स्कोर कर रहा हूँ, रुको। एंड ही जस्ट स्कोर्स द गोल। लुक एट दिस, हाउ अ लॉन्ग हो, कीपर का भी हाथ लगा था। कीपर के हाथ के बावजूद यहाँ पर द बॉल गोज इनसाइड द नेट। दैट्स अनफॉर्चुनेट, दैट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर Thlamz, बट लोन वुल्फ would be super happy with the start he has. finally, after so many pressure being built up, after so many offensive plays from Thlamz, finally Lone Wolf gets the first goal. It's all about maintaining it, but still, it's not going to be that easy. Was that a ball deflection? It went all the way towards his keeper, and no, it wasn't. That's the reason he got it in his hands. But goal. यहाँ पे थोड़ा फ्लाम्स को अभी समझना होगा, होम मैचअप है उनका एंड एक अवे प्लेयर ने उनके ही ग्राउंड पे गोल मार दिया है। ये चीज डेफिनेटली इक्वलाइजर तब होगा, तब तो काउंट होगा ही होगा। बट एम्बापे, रोनाल्डो को यहाँ पे पास उन्होंने अच्छी तरीके से निकाला है। राइट विंग की तरफ हाकी भी इंतजार कर रहे हैं, but he cannot afford to miss the ball. He passes it all the way towards Messi. Messi with an instant cross. बट इसी के साथ यहाँ पे एक अच्छा डिफेंसिव प्ले एंड वंस अगेन द बॉल इज बैक विद द साइड ऑफ लोन वुल्फ Great और ball, Thlamz great Thlamz lob यहाँ पे ball. मौका है। Eusebio उनके पास पूरा रन, it's him at the keeper and he Equalizer. takes a long range attempt. Eusebio gets the goal and that's gonna be a 1-all scoreline. There was no way we expected or we saw that coming, but somehow दोनों डिफेंडर्स एक साथ डबल चार्ज करने के बावजूद Eusebio was just too good to for both of these defenders, and he gets the ball in the net. Once again, Lone Wolf back with the ball. Hernandez in the left wing. Passes it all the way towards center. बच गए, Ronaldinho. वरना रोनाल्डिनो ऐसे मौके को बिल्कुल मिस नहीं हाँ, करते। डेफिनिटली। आई मीन रोनाल्डिनो शायद पोजीशन आती, वो टच थोड़ा-सा हेवी हो गया था। अदरवाइज़ इट कुड हैव बीन अनदर स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, बट Thlamz लास्ट डाइंग मिनट्स है यहाँ पर तारुण। Eusebio No, beats his defender. Eusebio, bro. great shot, and that's another one in the net. 90th minute, Thlamz slams another goal, and it's a 2-1 lead for him, and that should be it. I mean, there's no more time left. 2-1 के साथ Thlamz, he wins game number 1, जबकि Lone Wolf was the person who scored the first goal, Tarun. I mean, no extra minutes being added. क्या हुआ इस गेम में, how it got started, how it ended, and after that we have one whole game remaining for the start of none other than Lone Wolf, who will be playing in his home ground. Uh-huh. लोन वुल्फ ने पहला गोल जरूर स्कोर किया, बट उसके बाद बैक टू बैक जो दो काउंटर गोल्स उन्होंने कंसीड किया है, उसके बाद 2-1 का स्कोर लाइन है। अवे गोल स्टिल काउंट्स एज वन। सो दिस टाइम इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ दो गोल निकालना इनफ हो पाएगा उनके लिए। गलती से अगर एक गोल भी यहाँ पे निकाल जाएंगे Thlamz, so I think that would Mhm. just add up more goals required for the side of none other than Lone Wolf. This is going to be the final match of the entire day 2 here at the Esports Club Community Cup Season 2, and man, both of these players, it's so hard to say कि only one of these players are going to make it Uh-huh. in the top four. It's not even कि एक semi-final, it's like just a lower bracket round number 3, and इस round 3 के बाद एक round 4 होने वाला है, जिसके बाद they'll get all the way Yes. towards lower final. So the competition level is just at the peak. But for now, let's move on to the home match, जो कि आपको अभी के लिए देखने को मिलने वाला है लोन वुल्फ का। लोन वुल्फ इज डाउन 2-1, बट एग्रीगेट है अभी तो पूरी 90 मिनट्स का गेम है, अभी तो एक पूरा मौका है उनके पास कि वो किस तरीके से पूरी तरीके से Thlamz के ऑफेंस को समझ के एक काउंटर निकाल पाए यूजीबीओ के लिए। Oh, let's see if that comes into the play or not. Thlamz, he needs to score. He needs to score early on, ताकि वो जो प्रेशर है पिछले गेम का, जो लास्ट डाइंग सेकंड्स के अंदर उनके ऊपर पड़ा है, वो किसी तरीके से रिलीज हो जाए। हावी दो राइट नाउ विद द बॉल, plays it to the center, Modric, Lone Wolf, बॉल है अभी उनके पास। रोनाल्डो, एम्बापे, छोटे पासेस। रोनाल्डिनो क्रॉस करना चाह रहे थे, बट डिफ्लेक्शन आया डिफेंडर का, एंड बॉल जीतने में Thlamz कामयाब। And so far, Lone Wolf with Ronaldinho, we didn't saw any of those, plays. Especially when you expect such a great card in your whole, formation. But nonetheless, अभी के लिए Thlamz, he's going in for a counter attack. थोड़ा I think लॉ पास के ये था, but ये क्या किया Whoa, उन्होंने? what? What has he done? What in the world was that?
He somehow misses it. He was completely out of his concentration. कीपर पास मिस Focus किया। gavaya, and you don't expect that from Martinez versus Rio. This is that one player जिसका काउंटर निकालना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लोन वुल्फ के लिए. To all the goals which has been scored from the side of Thlamz, it's going to be Eusebio जो एक बहुत पावरफुल फिनिशर है. एंड अब यहाँ पे क्योंकि शुरुआती 15 मिनट्स पे एक गोल कंसीड हो गया, इनको कुछ करके दिखाना होगा क्योंकि अवे गोल मार दिया Thlamz ने. Ronaldinho passing it towards center, और there you go, Mbappe with an epic इक्वलाइजर। finish, and there comes the equalizer. But this is not going to be enough. As I told, जितना गोल यहाँ पे Thlamz अभी भी एक, मारेंगे वो यस। एक एक गोल एक्सटेंड होते रहेगा बिकॉज वो अवे गोल का एडवांटेज है हाँ, उनके हाँ। पास. And now it's not just one goal which is required, but rather two to win it. इट्स गोना बी डिफिकल्ट, इट्स डेफिनेटली गोना बी डिफिकल्ट एंड लेट्स सी किस तरीके से वापसी करी जा पाती है यहाँ पर लोन वुल्फ की तरफ से। एक तो चलिए मार दिया, बट एज यू सेड ही नीड्स मोर, ही नीड्स टू मोर टू पुट दिस कंप्लीटली इन हिज फेवर। पासेस यहाँ पर, शॉर्ट पासेस बाद लैम्स की तरफ से मेसी प्लेज इट टुवर्ड्स, प्लेज इट आई थिंक टुवर्ड्स रोनाल्डो, बट हर्नांडेज का काफ़ी अच्छा यहाँ पर इंटरसेप्शन आएगा। He's able to get the ball back, although the possession is just changing very quickly in the center field. बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। लुक एट दिस, द चैलेंजेस आर देयर, मिस पासेस मैं कहूँगा कहीं न कहीं दोनों ही टीम्स की तरफ से आ रहे हैं। फाइनली दो, व्हेन ऑल द डस्ट सेटल्स, इट्स सेफ टू से Thlamz has the ball for now. Modric, oh Let's no, see. Lone Wolf has the ball right now. Modric plays it towards Mbappe, back to Javi. रोनाल्डिनो स्ट्रगल कर रहे हैं बॉल को जीतने में, जी. बट डबल टीम होंगे। उससे पहले फाउल भी कमिट कर दिया था, दैट्स अ फाउल कमिटेड एंड बॉल बैक विद Thlamz। I mean, मुझे अभी भी लग रहा है कि अगर वो मिसप्ले नहीं होता तो imagine he would have been on the lead. But अब जो हो गया सो हो गया. There is no I'll say हाँ, हाँ। reason crying over spoiled milk. But nonetheless, one all का half time score line. 45 minutes, and that's going to be the last opportunity. If the scoreline continues, I believe Thlamz is definitely up on aggregate. But even if Lone Wolf comes up with a goal, Thlamz is still up, so this could go anywhere around. He really needs to make sure कि वो या तो drop पे ना जाए, especially 2 goals तो score करना होगा ही. Hakimi outside reward हुआ है, Modric को pass किया जाएगा. And there's going to be Messi, who is going to be all the way towards the wing. And Messi with the wing, he's really looking, too promising. उनका ball control आप देख सकते हो, बहुत लाजवाब है. His assist is, he's so precise with his aim. Modric backs away, and that's going to be Eusebio. Eusebio ने कैसे वो shot नहीं लिया? I mean, that should have been the shot, that should have been the goal, but somehow he misses it for some given reason, giving pass at the very last moment. Xavi back again. It's gonna be none other than Lone Wolf. एक गुड टैकल अपॉर्चुनिटी बन हकीमी, सकती थी, बट थोड़ा टैकल जो यहाँ पे आया गया उसके बाद तो लग रहा है कि अब फ्लाम्स यहाँ पे सिर्फ ग्रेट गोल मार के ही पासिंग। मानेंगे. बट क्या ऑफसाइड था कि दे बिल्कुल, आई मीन, लाइक Eusebio is one of the player just by these micro, सेंटीमीटर्स। like millimeters, उसके बावजूद यहाँ पे मिस किया. बट आप देख सकते हो इतना लॉन्ग रेंज अटैम्प्ट, एंड ही इज जस्ट सो पावरफुल इन दीस शॉट्स. लेट्स सी द फर्डिनेंड। बार-बार एंगल चेंज कर रही थी, डिड नॉट वांट टू लूज द बॉल मिडफील्ड, बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट ही डज। आई मीन बिल्कुल भी पोजीशन नहीं रख पा रहे लोन वुल्फ इन फाइनल सेकंड्स के अंदर। 68 मिनट्स ऑलरेडी हैव बीन ड्रेन्ड आउट। मेसी राइट विंग, ही ट्राइज टू मेक अ रन, फाइनली डिसाइड दैट नो, पोजीशन रखेंगे, आराम से खेलेंगे। वो अटैक बनाने की जरूरत नहीं है जो प्रॉब्लमेटिक रहे, बट यहाँ पर एक अटेम्प्ट है एम्बापे का, दोबारा से गोल से कुछ ही दूरी पर, बट इनफ टू डिनाई हिम द गोल। अ गुड अटेम्प्ट, नॉट द बेस्ट पॉसिबल वन। Modric though this time for Lone Wolf, he desperately needs to score, man. 10 minutes on the clock is what is left, Tarun, and ये लग रहा है शायद चला गया, ये शायद चला गया यहाँ पर Thlamz के फेवर में। 3-2 अभी एग्रीगेट स्कोर बन रहा है, एंड दिस विल डेफिनेटली फेवर Thlamz। Xavi पास नहीं निकला एंड उसको पूरी तरीके से क्लियर किया जाएगा। बर्कहेम टू मेसी, मेसी टुवर्ड्स इज़ोबियो, बैक टू बर्कहेम, दे आर जस्ट प्लेइंग द बॉल। ऑल द लूज़ करी है, बट मेसी का एक बहुत खराब टच, उसके चलते पोजेशन बैक विद Thlamz, and that should be the end game. 2 minutes on the clock, not enough time to score a goal. That's it, Tarun. 90 plus 2. Mbappe, क्या यहाँ पर insult to injury? Maybe, no, or maybe not. This time not. But that's gonna be it. That is gonna be it. Lone Wolf, he has been knocked out of the tournament, and he will be joining us in maybe Community Cup Season 3, Tarun, now. Surely, but none other than, we did saw Lone Wolf, who were at the lower Uh-huh. bracket. It was Thlamz who lost today's matchup. He came down, but he was quite prepared.
बट ये दोनों लोअर Hmm. ब्रैकेट मैचेस में एक चीज जो बहुत कॉमन थी, इट केम डाउन टू वन सिंगल गोल। एक गोल के डिफरेंस से हमने देखा कि किस तरीके से चीजें पूरी पलट गई। फर्स्ट मैचअप 4-3, Yep. this one matchup it all the way came down to what, 2-3 at the aggregate. We'll take a quick look at the scoreline, but man, both of these players, you talk about Lone Wolf, even if previously talk about the side of Red Devil, man, they had such an amazing game and such an amazing run in the entire tournament. बट ये सारे शानदार प्लेयर्स के बाद हमारे टॉप 4 प्लेयर्स भी हमें मिल चुके हैं इस टूर्नामेंट के। ये 4 प्लेयर्स कल एक फाइनल लास्ट डे पे आपको बैटल अप करते हुए नजर आएंगे। अब वो कौन से प्लेयर होंगे वो तो हम बहुत ही जल्दी आपको ब्रैकेट्स के रहते जरूर बताएंगे। एंड वो अपर ब्रैकेट लोअर ब्रैकेट्स के जो एडवांटेजेस है वो तो देखिए अभी भी जारी है, जो कि आपको सोम्या का भी देखने को मिलने वाला है। एट द सेम टाइम आई कैन नॉट वेट टू सी नाइकी वर्सेस सोम्या एज वेल। बट फिलहाल रिजल्ट्स पे अगर हम बात करें, वो वन गोल डिफरेंस, इट ऑल द वे केम डाउन टू 3 आउट ऑफ 4 मैचेस। सौम्या वर्सेस रेड डेविल आज के दिन की शुरुआत हुई थी। सेकेंड गेम में तो देखिए इक्वलाइजर आया था, बट रेड डेविल के लिए आज का दिन थोड़ा खराब ही रहा, क्योंकि अपर ब्रैकेट से लोअर ब्रैकेट एंड देन डायरेक्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट। Let's have a look at the brackets as well. The two players that have been eliminated, but बाकी दो जो आगे बढ़े हैं उस लोअर ब्रैकेट्स के अंदर, उनके लिए अब थोड़ा सा रास्ता और आसान हो रहा है. They just need one more game to win. Saumya versus Vishdill, the upper bracket final. लोअर ब्रैकेट की बात करी जाए तो अब Thlamz versus Nike. Repeat telecast of the upper bracket, Sarun. Repeat जी। telecast. 5-4 से हराया था पिछली बार. Thlamz ने Nike स्वीट रिवेंज चाहेंगे इस बार, क्योंकि दिस वुड बी द बेस्ट पॉसिबल वे, राइट? आई मीन नाइकी वहाँ हारे थे, उनको सेकंड मौका मिला, बट क्लैम्स अब अगर यहाँ हारे, ही विल बी नॉक्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट. एंड इमेजिन अगर थ्लाम्स जीतता है वहां पे विजडिल थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं सौम्या के अगेंस्ट, तो थ्लाम्स वर्सेस विजडिल भी एक पोटेंशियल रीमैच हमें कहीं ना कहीं कल देखने को मिल सकता है। तो टुमारो, man, one of these players are definitely going to be the champions. A line share of 50,000 INR is on the line, and साथ ही साथ I'm guessing कल का दिन पूरा एक रिवेंज डे हो सकता है सारे खिलाड़ियों के लिए, जैसे आपने कहा। यस. पहले तो आपको यहाँ पे नाइकी का मैचअप देखने को मिल रहा है, बट फिर अगर विजडिल हारते so that could be another potential matchup. बट यस गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडे. कल हम लोग फिर से जुड़ेंगे और भी कुछ अमेजिंग मैचेस के साथ. सो स्टे ट्यून. Do tune in. I'm sorry. Do tune in tomorrow at the same time, 3:30 p.m. We will be live with some more football actions. Till then, take care. Bye bye, and see you tomorrow.